ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணிம்ல இப்போ 93வது தசகத்திலேருந்து படிக்கலான் இருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. பந்து ஸ்நேகம் விஜஹ்யாம் தவ ஹி கருணையா த்வய்யுபாவேஷிதாத்மா சர்வம் த்யக்த்வா சரேயம் सकलमपि जगद्वीक्ष्य माया विलासं नानाद्वाद्भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेधो वा कथं तौ त्वयि निहितमथे वीतवैषम्य बुद्धेः क्षुतृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुषैः वरः तज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्मात्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुः यस्त्वयि न्यस्तचेताः तापोचित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत् स्वात्मवैरी ततोऽन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैव न हि गुरुः लोकवृत्तेऽपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्न हि चलति ततः सक्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामीश तद्विषयपरिचये अप्यप्रसक्तिं समीरात् व्याप्त त्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशात् भातु निर्लेपता च स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुर उदकवद्वह्निवल्मास्म गृह्णाम् सर्वाणीनोऽपि दोषो तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्वेयां पुष्टिर्नष्टिकलानां शशिनैव तनोः नात्मनोऽस्तीति विद्यां तोया दिव्यस्तमाताण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहाद्व्याधास्तपुत्रव्यसनमृतकपो तायितो मास्म भुवं प्राप्तं प्राश्नन् सहेय क्षुतमपि शयुवत् सिन्धुवत् यामगाधः मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवत् भृङ्गवत् सारभागी भूयासं किन्तु तद्वत् धनशय नवशात् माहमीश प्रेणशं मा बद्यासं तरुण्या गजैव वशया नार्जयेयं धनौगौ हर्तान्यस्तं हि माध्वी हरैव मृगवत् मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्यासज्जेय भोजे जशैव बडिशे पिङ्गलावन्निराशः सुप्यां भर्तव्ययोगात् कुररैव विभो सामिशोऽन्यै न हन्यै वर्तेय त्यक्तमानः सुखमतिशिशुवन्निस्सहायच्छरेयम् कन्याया एकशेषो वलयैव विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै परमिषु कृदिव क्ष्माभृदायानघोषं गेहेष्वण्यप्रणीतेष्वहिरिव निवसान् युन्दुरोर्मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदित्यूननाभात् प्रतीयां त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विद्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरे यो विवेकौ विरक्तिं
धत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात्। हि मे देहमोहं त्यज पवनपुराधीश यत्प्रेमहेतोः गेहे वित्ते कलत्रा दिशु च विवशिताः त्वत्पदं विस्मरन्ति। सोऽयं वक्ने चुनो वा परमिह परतः साम्प्रतं चाक्षिकर्ण त्वज्जिह्वाद्या विकर्षन् यवशमतयितः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे। दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् कृत्वा भक्तिं द्रटिष्टां कुरु तव पदः पङ्केरुहे पङ्कजाक्ष। नूनं नानाभवान्ते समधिगतममुं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षूत्रेहा हन्त मामा क्षिपविषयरसे पाहि मां मारुतेश। ओं श्रीहरये नमः। दशकं 94। शुद्धा निष्कामधर्मैः प्रवरगुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियाति व्यपगतमखिलव्याप्तमावेदयन्ते। नानात्वस्थौल्यकार्ष्या दितुगुणजवपुः सङ्कतोऽध्यासितं ते वह्नेर्दारुप्रभेदेषु इव महदनुता दीप्तता शान्तताति। आचार्याख्य आधरस्तारणी समनुमिलत् शिष्यरूपोत्तरारण् यावेधोद्भासितेन स्फुटतरपरिभो धाग्निना दह्यमाणे। कर्मालिवासनातर्कृततनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे दाह्या भावेन विद्या शिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्ववस्थाम्। एवं त्वत्प्रार्थितोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायो नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगदषड्गुण्यषट्कर्मयोगाः दुर्वैकल्यैरकल्यापि निगमपताः तत्फलान्यप्यवाप्ताः मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्दान् विषादान्। त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनु भयरहितो यत्परादत्वयान्ते त्वद्भीतसत्यलोके पिन सुखवसतिः पद्मभू पद्मनाभ। एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं छिन्धिबन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो। यातात्या त्वन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ माया विद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौतौ। बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च भिदां तावती तावदेको भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान्नापरो निर्व्यतात्मा।
जीवन्मुक्तत्वमेवं विदमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामा शुद्धबुद्धे न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णु कृशिष्ठां स्वयकृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं येन स्यां मंक्षु किञ्चिद्गुरुवचनमिलत् त्वत्प्रभो दस्त्वतात्मा शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसः त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्द्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां विप्रते निष्प्रसूतिं यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहराः दिव्यलीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं भ्रियासं यो यावान् यादृशो वां त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् एवं चानन्यभावः त्वदनुभजन मे वाद्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रि प्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजा नतिनुति गुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि यद्यल्लभ्येत तत्तत् तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहं त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मा दिशु लसितचतुर्बाहुमाराधये त्वां त्वत्प्रेमाद्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्दता भक्तियोगः ऐक्यं ते दानहोमव्रतनियमतपः साङ्ख्ययोगैर्दुरापौ त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रं भक्तेष्वन्येषु भूयः स्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णवातालयेश ओम श्री हरये नमः दशकं 95 आदौ हैरण्यगर्भीं तनुमविकलजीवात्मिकामास्थितस्त्वं जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तसे विश्वयोने तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन चित्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तता हे त्वमेव सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवारा चित्तं तावद्गुणा च ग्रथितमिहमितः तानि सर्वाणि रोद्धुं तुर्ये त्वय्येकभक्तिः शरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत् शन्ति श्रेयांसि भूयाम् अपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दा च शान्ता बहुविधगतयः कृष्णतेभ्यो भवेयुः त्वं शासख्यात सख्येननुमहिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां
त्वद्भक्त्यानन्ततुल्यः खलु विषयजुषां सम्मतः केन वा स्यात्। त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युताशस्य चाचाहां सर्वास्यु सौख्यमयः सलिलकुहरगः एव तोयैकमयः। सोऽयं कल्वीन्द्रलोकौ कमलजभवनौ योगसिद्धीश हृद्याः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः। त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैः इन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजयः। सप्ताचिर्दीपिता चिदहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चं त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदक्वेन्द्रियाणाम्। चित्ताद्रिभावमुच्चैः वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुद्ध्येत् कथं वा किमु बहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः। त्वद्गाता स्वादसिद्धा जन सततमरीं रुज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाप यस्तया तर्ककोट्या। ध्यानं ते शीलयेयौ समतनुसुखः धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षः पूरकाद्यैः जितपवनपतः चित्तपद्मौ त्ववाञ्छौ ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविभिदुषिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थं भावये त्वां सजलजलधर श्यामलं कोमलाङ्गौ। आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यान्दाद्रौ कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालो रुहाराभिरामं श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्चायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत् कुतुकमिति मुहुर्धारयन्नीचचित्तं तत्राप्येकत्रयुल्ये वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे। तत्र लीनन्तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहूर्ति समुपारूढयोगो भवेयम्। इत्थं त्वद्ध्यानयोगे सति पुनरनिमात् अष्टसंसिद्धयस्ताः दूराश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकयाः सम्पतेयुर्मुरारे। त्वत्सम्प्राप्तो विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहं त्वामेवानन्दपूर्णौ पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात्। ॐ श्रीहरये नमः। दशकं 96। त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमहिमन् अक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राण्यां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां
पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्य नन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्वं क्रतुषु च जपयन्योऽसि वीरेषु पार्थः भक्तानामुद्धवस्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेः विकसततिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्वं प्रधानो यतिह भवतृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्तिप्रियत्वात् मखमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नौ निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्मापि भक्तिः त्रितयमिह भवत्प्रापकौ तत्र तावन् निर्विण्णानामशेषे विषयैः भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगः त्वयि हि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्ताः त्वयि च धृतरसाः भक्तियोगो ह्यमीषाम् ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशाः मत्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन्नाकखो नारको वा आविष्टं मां तु दैवाद् भवजलनिधिपो तायिते मत्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेताः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्ते तीव सिद्धिं बहुतरजनुषाम् अन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफले नन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यः त्वरितमयि भगवत्प्रापको वर्धता मे ज्ञानायैवाति यत्नौ मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यः तस्य मुक्तिकराग्रे त्वध्यानेऽपीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपा चारुताभ्याम् निर्विघ्नः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातः श्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् पुष्णीया भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंक्षुणं क्षन्ति संगाः कच्चित् क्लेशाजितात् क्षयविमलमतिः नुद्यमानौ जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहावा चेतो मे दुःखहेतुः तदिह गुणगणं
भावयत् सर्वकारीत् युक्त्वा शान्तो गदस्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम्। ऐ लव् प्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनाः सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमितं क्षुद्रमे वेति गायन्। त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरमचरत् तद्वदुद्धूतसङ्गौ भक्तो तं संक्रियामां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान्। ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. இன்னைக்கு 93லேருந்து 96வது தசகம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். 4 தசகங்கள் படிச்சிருக்கேன். 97லேருந்து 100 இன்னைக்கு சாயங்காலம் இல்லாட்டி நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணி போடுறேன். நாளைக்கு 11ஆம் தேதி கீதா ஜெயந்தி, பகவத்கீதை படிக்கணும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக எல்லாரும். அது முடிஞ்சால் ஒரு பகுதி நான் நாளைக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி படித்து அப்லோட் பண்ணி போடுறேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.